it is not possible to say that you can take the clay, let me keep the clay pot. Okay. Clay is the pot. The absence of clay negates the existence of clay pot. Correct? Is this ये तो clear? दोनों के लिए तो सेम ही हो गया ना, क्ले और क्ले पॉट. विदाउट द क्ले देयर इज नो क्ले पॉट, विदाउट द क्ले पॉट क्ले का क्या यूज है? Always exists. Without the clay pot, clay always exists. Without the ornament, gold always exists. हाँ, लेकिन बिना पानी के या बिना नहीं थॉट नहीं के तो यूज कुछ नहीं है ना, वो नहीं मिट्टी है. यहाँ use this not the utility. अच्छा. Clay exists regardless of pot or not. Clay pot cannot exist without the existence of clay. That's why clay is called the upadan karan for the karya called clay pot. Question? तो क्ले जो है उपादान कारण हो गया, करेक्ट? Yep, correct. कार्य. कार्य, ओके. Clay pot is. इक्वल लाइन हम बोले थे, देयर कुड बी मेनी उपादान कारण एंड देयर कुड बी मेनी निमित्त कार्य इन वन और मेनी. ये लाइन समझ में नहीं आया. So, two persons make a clay pot. Possible, not possible. Two persons working to make wooden table. Possible? Now has at least two upadan, wood and the nails. Yes, Correct. no? Yes, correct. Now, without the nails, will be different form. But without the wood, the nails cannot alone make the wooden table. That's why, though nails and both are called upadan karan, but truly is the wood that is called the upadan. एक क्वेश्चन और, जब बताया गया था ऊपर कारण है, ये सब रिलेटेड टू द नॉलेज था. Yes. ना? Yes. अंतःकरण हुआ कि माइंड, नॉलेज, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सब अंतःकरण हुआ. और फिर उसमें से नॉलेज आया कि भाई नॉलेज मतलब ज्ञान जो है वो यहाँ पे नॉलेज विद्या भी होगा क्या? Every knowledge you're talking in context of Bhagavad Gita or Upanishad is Vidya only. Talking about the knowledge of Sat only. Okay. Then ये not Asat. We are talking of Upadan Karan, Nimitta Karan and Karya and the concept of fact. Clay pot is the effect, clay is the cause. Now, understand this concept that
effect is always hidden in the cause. Clay pot is always hidden in or skill and knowledge of the nimitt karan, clay pot clay. That means only the uh, or is the clay pot, is not a separate entity. It's the clay only, but it a form and name and virtue. Okay, is this clear? So you said it's clear only, but not but a different. Okay, so let me come to this from different side. Perceived by a jivatma in this entire creation has three things. Okay, only three things that is used of an entity jivatma creation. Absence of three characteristics, an object will not be perceivable by a jivatma. And those three things are Naam, gun, No. so clay pot is the clay only, but the Nam, Gun, and Roop. Is clear? Yes. Now we can understand better that the effect, the clay pot, is in fact Upadan Karan clay. Building the concept. If you understand this, you should build this, that effect is always hidden in the cause. The Nimit Karan only transforms it with three attributes. That's it. Is this clear? Not clear? Cover it. Yes, It Prabhu. will Yes. become clear. Mhm. In the ocean, Mhm. the is the nimit. Water is the upadan karan of the wave. The quiet water of the ocean is hiding waves. The wave is not a different thing as compared to the water, calm water of the ocean. The wave has only a different form and since the wave has always that water, the water always has contained waves in itself. Is this clear? Correct. Yes, yes. We understand Upadan Karan and Nimitta Karan. But what we have to understand where that is not important. What we derived a philosophy or concept which is
is hidden in its immediate cause. Sure. Okay, so we have to make sure that we remember these concepts. These concepts are going to be utilized in the understanding of Bhagavad Gita. Hmm? कॉज अगर आत्मा है तो दिस इफेक्ट ऑफ विद्या were always there. Both are there in that sense. Cause is not so what we have just established is let me repeat it, that effect in its immediate cause. Okay. Soul is not the cause of any body, none of those three bodies. Cause of three bodies. The immediate cause of gross body is the subtle body. The immediate cause of subtle body is the causal body, and immediate cause of the causal body is the are the vasanas from the previous. Soul is not the cause of anything at all. Soul is just the owner of these three with the vasana. It is just taking the ownership of running it. Is it clear? ये क्लियर है, बट इसी में एक और क्वेश्चन था पहले भी था, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कि हम एक बात किए थे कि विदाउट परमात्मा आत्मा इज Correct. ओके, है ही नहीं, तो इधर ये ओनर कैसे बन जाता है इस साइड में? Okay. Ownership comes from maintaining three things: Nam, Roop, and Guna. Okay. If you, as an individual, are responsible for maintaining the Nam, Roop of, and you call the owner that. करेक्ट, बट हम लोग ये भी बात किए थे कि आत्मा का जो है रूप नहीं, और but what we are talking about is you are you are called to be an owner of a car because you are responsible for the Nam Roop Gun of the car, the maintenance of that. That the moment you do not maintain or you are not associated in maintaining the Nam Roop Gun of the you are car. Soul is responsible for running the Nam Roop and Gun of all three bodies, and that's why it is called the owner of three bodies. There is no transaction in here. Ownership does not mean transaction. Ownership is means. clear. Okay, some more questions? Question, concept, points? You're right. Well, जब आत्मा
को अपने कुछ नहीं था, तो वाई आत्मा कम किया क्रॉस वासना? बिकॉज आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए था। तो this is the creation of Jivatma. हाँ, लेकिन क्यों आया आत्मा इन कनेक्शन टू वासना? आत्मा रह The creation of this creation हुआ ना, we can to digress and go to Svetashvatara Upanishad to start this. If we wanted to go in that direction, I will start work. We will be studying Bhagavad Gita. This is the philosophy of the creation of this creation, the cause of this creation. Stick to the Gita first. Cause of this creation is the topic of couple of Upanishad. It's not discuss Bhagavad Gita at all. Cause of this creation. Okay. If we can do it briefly, then let's do it. Otherwise, let's skip it for now. That is going to be done if we don't understand the basics. I'm trying to cover the basics, because without the basics we cannot understand Bhagavad Gita is. We can translation of any who is the writer, but we cannot understand the meaning of that, true meaning of us, and how does it change us. Gita does not explain Arjun about any basics, because Arjun had all the basics covered long time ago. Got it. And we do not have the basics covered as much as possible, so that when the time comes to understand the concept, we have to understand the concepts. Otherwise, the concepts cannot be understood without basics. That is without with the understanding, trying to understand Bhagavad without understanding these basics. Okay. Okay. What was the next thing? I'm just looking at my marks. Give me a minute. सबको क्वेश्चंस लिख करके और पॉइंट्स सब लिख कर रखना चाहिए ना. नहीं रखे हुए हैं वो. हम एक्चुअली आगे चले गए इसलिए वो वापस हम जस्ट लुकिंग बैक. बीच में हम वो श्लोक वगैरह भी आप बोले थे पढ़ने के लिए, तो उसका क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं. वही श्लोक का क्वेश्चन पूछ ले. तो श्लोक 2.1 है. लाइन प्रभुपाद जी ने यूज किया है, कंपैशन फॉर इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन. no, हम उस तो हम वो जो है प्रभुपाद का
उसका मीनिंग हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे। ये शायद अब अभिराम प्रभु अधिक बता सकते हैं कि क्या क्या मतलब है। हम जो बता रहे हैं, वो जिस कंटेक्स्ट रहे हैं, वो जो अदर स्क्रिप्चर में क्लियरली रिटन है, वो चीज़ बता रहे हैं। इस परपोर्ट का द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन ये डिस्कस्ड है उसमें डिस्कस्ड है कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये अभी बहुत प्री मैच्योर है। हम लोग को बहुत सारा कंसेप्ट पहले क्लियर करना है, अंडरस्टैंड दैट उपनिषद। लेकिन उपनिषद में लिखा हुआ है स्टेप्स, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, हाउ वी कैन what is realization, what are the steps, and how we can proceed in that direction. Okay, but I don't know क्या मतलब है इसका, लेकिन compassion for the eternal soul is self, इसके फॉर बोला जा सकता है। हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं इसलिए। ठीक है। ये तो फिर हम लोग आगे अभी हाँ, आगे करने के लिए हाउ विल वी मूव अहेड? we'll read one verse and we'll discuss. We don't have to read the purport of any. ठीक है, वही हम सोच रहे थे कि देन बेटर है कि आप ही समझाएं। We can read and discuss what we all understand, and that will be good enough. ठीक है, डन। श्री गणेश करें। So I think last time we did little bit of this titiksha and uparati. So by this time we know few qualities of a sadhak. Correct? And that is and those what do you say? Who was saying something? Yes. No. And that is discrimination. Did we talk about this? थोड़ा सा टॉपिक लिया था तुम। Discrimination. We just want to revise if everybody understands these qualifications or not. What is this discrimination? We have to understand these concepts, because without understanding, building something on books or notes or words will be extremely difficult. What is discrimination? डिस्क्रिमिनेशन ऐसा थोड़ा सा याद है कि बताया था कि
कैसे अंतर उसमें दोनों को कैसे कि क्या सीन और समथिंग लाइक दैट उसमें कुछ था, ये ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लिया था तुम, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ बताया था। ठीक है ठीक है। एक और एक और अननोन स्पीकिंग के मूड में नहीं। नहीं, मुझे बोल रहे हैं के बारे में ओह okay, so I'll understand these things. The concepts have to be understood without any confusion at all. Okay, so do we all understand what is sat and what is asat? If we do not understand that, then we should go back to the understanding of this first. Anybody? वो समझ में आ गया प्रभु, सत्य and असत. So understand what is sat and what is asat. The So which is real is sat, which is opposite, which is not there in any of the calls is. for this time, as at this time, stand sat and asat in the context of their existence. We should understand that sat is which scope of kal, means Okay. that entity before is while the time is and will be forever. And asat, something, existence, the birth has been seen and is sure to see the dissolution of that entity. That is asat. Okay. Now Okay. the in understanding of what is sat and what is asat is called discrimination. It is the capacity of the first sentence, because I'm going to start building on top of that. Understanding of what is sat and what is asat is called discrimination. Conviction of understanding. Correct. It's the conviction in the understanding, not understanding. The understanding between the similar, the difference between sat and asat, there is no similarity, by the way. The understanding between the understanding of the difference between sat and is still knowledge, discrimination. That's what I'm trying to say. Okay, is that clear? Okay. All three? Clear, Prabhu? Okay. Now, conviction is the capacity of intellect. Okay. So, discrimination becomes the capacity of the intellect to distinguish, categorize, and recognize sat. Important thing is to इसको understand is the knowledge is not discrimination. Discrimination comes from intellect. Knowledge comes from chit. We are differentiating here all the four components: mind, intelligence, and self ego and chit.
Clear? Yes. चित्त एक्सप्लेन करो. एक बार फिर से वो रिपीट करना पड़ता है. अरे नहीं, इसका क्या नॉलेज नहीं? कम्स फ्रॉम चित्त. हाँ, और कन्विक्शन का इंटेलिजेंस. तो कहाँ से आप? Knowledge is stored in the memory, which is called chit. Knowledge is in the space. When we acquire the knowledge, that knowledge is stored in chit in the form of memory. Uses that memory and creates the capacity to have a conviction on that knowledge. That conviction is called discrimination. एग्जाम दो एक तो इसके बारे में कुछ. What is conviction? Conviction, believe on the application of knowledge and its validity. Is conviction is the information that I have gathered is valid for me. It is true, and I know how to use this knowledge. Only when we have the conviction of the knowledge that we have gathered is help intelligence that helps mind in deciphering what is right, what is wrong. The capacity to differentiate that is created in the intelligence with the use of the knowledge acquired. Is that clear? Little bit more? No clear. अच्छा. क्योंकि एक बात ट्राई टू पूछ ले पहले. बोलो. Yeah. मेरा था कि वो जो बोला कि हॉर्सेस होते हैं, फिर लगाम होती है, फिर चैरियट है, फिर ड्राइवर होता है. हाँ, Okay. ये वाला है ना, तो है ना. तो इसके अंदर चित्त कहाँ है? नहीं है तो वाले उसमें ये वाले कंसेप्ट में चित्त नहीं है. नहीं है. ओह अच्छा. कि मैं जानना चाह रहा ना कि जिसके अंदर सेंसेस कंट्रोल. कंसेप्ट में जाना चाहा है, उस कंसेप्ट में एवरीथिंग दैट इज in that context that is used are either the work or upon. Chit is the knowledge acquired. It is neither the worker worked upon. It is used as instrument of the work. ठीक है. वो एग्जाम्पल जो है extremely difficult to understand. It's not that easy without the concept of what is work, what is worked upon, and what is the resource of the work. These resources of the work are different than upadan karan. That comes in different concept of the work. Okay. So we'll come to that when we, but not at this time. So in short, discrimination is the capacity of intellect. Capacity of intellect, but
capacity of intellect to differentiate between सत्य Sat and Asat. Okay. We just have to understand that we are talking in the bigger concept of the life of a jiva. Okay. So फिर discrimination क्यों? Discrimination to me is a negative word. एक्चुअली इसका हिंदी संस्कृत वर्ड है विवेक. Vivek. Wow. ओके. विवेक. विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सोचा ही नहीं था कभी. ओके. Seriously. So English words बहुत confusing. so it is said nitya anivivek. Okay. So capacity to differentiate between permanent and impermanent. The Sat and Asat is Vivek. Mm-hmm. Give me 1 minute, I'll be back and we'll talk a little bit. You discuss about what is Vivek between three of you. विवेक मतलब बिना मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों सोचा उसके बारे में कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब होना चाहिए विवेक का. विवेक मतलब तो इंटेलिजेंस. इंटेलेक्ट ही बोलूंगा ना मैं उसे. इंटेलिजेंस क्या होता है? विवेक मींस इंटेलेक्ट. विवेक मीन्स इंटेलिजेंस भी नहीं, बट विवेक मीन्स कि सही और गलत में को फर्क पता, बुद्धि यूज. विवेक अगर बुद्धि होता तो डिफरेंट बात होती, बट ये राइट है ना. तो डिस्क्रिमिनेशन राइट वर्ड है. You can discriminate between right. विवेक मतलब मेरे साथ now I understand because you told me. So this gives me an idea why it's called discrimination. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव. जब हम भेद कर पाए तब क्या, उसी को डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. तो उसी को भेदभाव बोल देते. जो डिस्क्रिमिनेशन विवेक का मतलब जरूरत थी. अभी इस भेद स्टैंडिंग को विवेक बोलते हैं. समझ. So, are we clear about what is discrimination? Vivek? हाँ. Okay. Any question on? एक अच्छा डेफिनेशन है कि सत और असत के बीच में भेदभाव करने को ही डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. भेदभाव का अंडरस्टैंडिंग. Which is why English. Okay. Now, there are few kinds of vivek. Okay. And this has to. I'm not going to go into the extreme detail of these kind of discriminations, because when it will come to the point in our discussion in Bhagavad Gita, we'll discuss these things in more much more detail. But we just have to discrimination in few categories. Okay. First category is called Anshi Vivek.
Okay. Ansh means part. Anshi, whole. It's Ansi Vivek. Yes. The discrimination between what is part and okay. The next is Sadhan Sadhya Vivek. Okay. Hmm? What is goal and what is mean? Hmm. So, sadhya means Sadhya is goal. Sadhana Sadhya Vivek. The third is Shriya we discuss this? I think we did or we did not. श्रेय विवेक भी नहीं सुना. it's not the first time. Okay. We'll discuss when it times comes, but just write it. Shreya is good and Preya is pleasant. Okay. प्रेय है कि प्रिय है? प्रिय है. Preya. प्र एक ही मात्रा और या. Pre and Shrey is Sreya. Shrey. श्रेय प्रेय Shreya Priya Vivek. good and pleasant discrimination. इस जो गुड है वो प्रिय नहीं होगी. The next is Atma Anatma Vivek. Okay. This is the differentiation between discrimination between what is self and what is non-self. And then the next Nitya Anitya Vivek. नित्य. Yeah. Yeah. Okay. Mm-hmm. So this is what is eternal and what ephemeral. Nitya and what is anitya. So we'll come to each of them when the relevant verses Bhagavan will talk. About these things, we just have to understand that all type of have of what is sat, what is asat. Okay. Mm-hmm. Okay. So we talked about discrimination last time. Did did we talk about vairagya? नहीं. क्लास के थे ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग. प्रतीक्षा. हम लोग ये और सब चीज का थोड़ा बात बहुत कर यह रहे कि हम लोग का बात कर रहे थे बिकॉज अर्जुन display possession of these qualities. Okay. And the first quality was discrimination. The second quality was vairagya. That I'm ready to go back to the forest and live by begging. Nothing to do with these things. I don't want to fight.
I don't want the kingdom. I don't want to enjoy any one of these things. I'm just leaving this place. That's the. But Prabhu, वैराग्य कहाँ है complete? He was still in love with his kins और Yeah, वो अभी भी relationship वाले उसमें प्रेम में है. Because of the love of his family members, he shows the symptom of vairagya, that I leave these things for them and I detach myself from the enjoyment of them, of things. That's vairagya. Okay, yeah, he was ready to renounce even his loved ones. Okay, so that is vairagya. So I think we talked about this a little bit, or we did not. ना नहीं किए थे. सब याद नहीं है, because I did talk about the difference is dispassion and what is uparati. The difference between vairagya and uparati. We did talk about that. तेरे पास है पुराना लिखा, उसमें शायद बात किया होगा. Then if We did touch upon, थोड़ा सा आपने पूछा था कि अर्जुना में क्या क्वालिटी था जिसकी वजह समझने से का चीज है ये क्या चीज है. What is dispassion? Dispassion, not renunciation. संन्यास और वैराग्य अलग अलग चीज है. That's what. And we did talk about and dissimilarity of vairagya with uparati. ये अच्छा रहेगा कि ये सब चीज को आदमी समझ ले एक बार ठीक से. आपने बताया तभी समझ आएगा, एक बार बताने से थोड़ी ना. अगर आदमी एक बार एक्सेप्ट समझ ली, कंटेम्पलेट करेगा तो फॉर एवर रहेगा. So संन्यास हुआ renunciation. sannyas, I'm not talking about sannyas. Show the symptom of sannyas. Did show the symptom dispassion, vairagya. That's the difference. Okay. So I'm not discuss sannyas much, but we should know little bit, if not everything about dispassion, little bit about that. Okay. समझना है कि वैराग्य होता क्या है. What is vairagya? What is dispassion? Dispassion is the lack of desire to enjoy this world has to offer and heaven has to offer in between. That means anything that this material world has to offer, the lack of desire to enjoy is dispassion. Okay. And he clearly showed that. That's we are talking about the dispassion after discrimination, because only after the person has the discrimination that he can go in the path of passion. Dispassion grows from discrimination. Dispassion arises from discrimination. Discrimination gives power to mind through intellect. Dispassion purifies the mind. That's the difference. Okay?
Discrimination gives strength to the mind, intellect that conviction in the knowledge that it has gathered. Whereas dispassion, what it does, it leaves the mind from unwanted attraction and attachment. It purifies the mind. Is that Yes. Purifies the mind from unwanted. okay? So we'll read this in six for quite a lot, but the starting of the dispassion dissolves moving uncontrollable thoughts in the mind. ये तो कंट्रोल ऑफ सेंसेस में आ गया ना. सेंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पर काम कर रहे हैं. Dispassion is the symptom of mind, not senses. Things related to senses are called dumb. Will you talk about this? Sham and from dispassion comes the power of sham to control the mind, and then comes dam, which is control of senses. So what we say is the base of everything is the discrimination. From discrimination comes gives power to control. Mind is controlled through sham. We go to the stage of dam when we control the senses. These four things are there. We are ready to live stage of uparati. And the last is titiksha. For a while, that is the last. Okay. Now, anything to discuss, because it's already already 11 o'clock. Okay. To discuss in today's thing or any question, comment. माता जी कुछ नहीं बोलती हैं? अभी तो माता जी बोलिए. माता जी कुछ कुछ बोलती हैं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं? नहीं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, मेरे ऊपर से निकल जाते हैं. छोटा छोटा वर्ड यूज करना पड़ेगा. जबरदस्त रहती तेरी अलका जी, आपकी हंसी जो है ना एकदम लूप में. हाँ, नहीं थोड़ा सा अभी अपना व्यूज कुछ बताइए, कुछ कंफ्यूजन बताइए कुछ. तब भगवान भी ये बोलते हैं, बहुत ही हम डिस्कस नहीं करेंगे, शेयर नहीं तो दूसरे को कुछ फायदा नहीं होगा. थोड़ा सा तो उनको ऐसा लगता है कि कोई जो है उनको मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन निकल जाए मुंह से, या सामने वाला मूर्ख न समझे. उसके लिए मैं हूँ, आप चिंता क्यों करते हो? नहीं, बड़े मूर्खता वाले क्वेश्चन होते हैं. मूर्ख कोई नहीं है इस रास्ते में. क्वेश्चन जो
इस माँ से प्रेरित नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं। बात क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड अगर है तभी उनका कोई रेलिवेंस है, अदरवाइज तो मूर्ख का कोई रेलिवेंस ही नहीं है। मतलब फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट के लिए मूर्ख है, ग्रेड स्टूडेंट के लिए मूर्ख है, लेकिन एक्चुअली मूर्ख कोई है ही नहीं रास्ते पर, है ना। ठीक है। ये समझना चाहिए ये लोगों को। मतलब थोड़ा में भी दिक्कत, लंबा वर्ड है इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स में थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए हिंदी में रहता है तो हिंदी में और भी कठिन है। ऊपर आती वगैरह ये सब वर्ड तो सुना ही मैंने फर्स्ट टाइम है। नहीं, इंग्लिश नहीं है ना। उपरति तो हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है ये तो, है? कभी सुना ही नहीं है, तो समझने में टाइम लग जाता है। ओके। मे बी अब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, थोड़ा टाइम बाद से हुआ लेकिन रिकॉर्डिंग हो गया, तो शी माइट गो थ्रू अगेन एंड तब पास कुछ क्वेरीज रहेगा, इनपुट रहेगा। नहीं, ये चीज जो है ना, अगर ऐसा कोई कैसे, ऐसा कोई समय नहीं है जबकि जीवात्माओं में भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन जीवात्माओं में अक्सर ऐसा सिचुएशन होता है कि कैपेसिटी ना हो कि उस भावनाओं को एनालाइज कर सके। हर जीवात्मा ये सब सिम्टम शो करता है, लेकिन कोई कभी इस सिम्टम को समझ पाता है। ये भगवान बोलेंगे अभी आगे 6 चैप्टर में, बोलेंगे भगवान कि जब ये समझने लगता है आदमी अपने भावनाओं को, तो एक स्टेज आता है इन बिटवीन थिंकिंग एंड थॉट। उस पॉइंट को भगवान बहुत बार बताएंगे अर्जुन को लेटर, कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न and that between thinking and thought, that is the only and the last point where you can come back. When it happens, there is no going back. It will take action, will take place. बहुत डिफरेंस है, लेकिन कुछ तो अपने को भी, अपने से भी कुछ पढ़ना लिखना चाहिए ना। सबका हिस्सा तो तुम पढ़ करके सबको बता रहे बोल रहे हैं। जब तक कुत्ता को मीट लाके खिलाता है तब तक कुत्ता शिकारी नहीं बनता है, और शिकार प्रोपेंसिटी है ना, वही जाता है अगले लाइफ में। वो जो खाना दे देता है कुत्ता को लाइफ में, खा भी नहीं जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो भी नहीं जाएगा। चित्त में जो रहता है कुछ नहीं जाता है अगले लाइफ में। चित्त से जब वासना का फॉर्म ले लेता है तब जाता है दूसरे लाइफ में। जब तक अपने आप से पढ़ने का मन नहीं करेगा तब तक आदमी को कुछ नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल नहीं। जब तक ज्ञान रिस्पॉन्सिबिलिटी से फोर्स्ड थिंग्सबिलिटी नहीं बने, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैचमेंट नहीं बने, अट्रैक्शन नहीं बने, वो जो है वो डिज़ायर का फॉर्म लेता है कि हमको ये करना है। उसके बाद ये फॉर्म हो जाता है ग्रीड का। डिज़ायर और ग्रीड जो है ना जाता है, वो भावना बन जाता है कि हमको क्या करना है, ये सब चीज़। ठीक है। So हमारे ख्याल से थिंकिंग इज द प्रोसेस और
thought is the end product of that process. Yep. Is that a दिमाग में आ गया तो अपने आप में थॉट हो गया ना वो तो। ठीक है ठीक है, ये सिनेमा का लैंग्वेज नहीं है ना बोल रहे हैं। अरे वो सिनेमा कहाँ मैं बोला बिना है, बिना दिमाग में आ गया तो हो गया। नहीं थिंकिंग से थॉट में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बता रहे हैं। क्ले पॉट जो is it the making of clay pot is thinking. Okay, now अगर सोचा कि अच्छा सोचा किसी को मारना है और चाकू उठा लिया मारने के लिए, तो उसका बीच वाला जो है तो जब मारना भी रुक जाना है। थोड़ा पढ़ चाकू लो, उठा लिया जब तो मारना पड़ेगा। पढ़ लो या फिर न, अगर नहीं पढ़ो तो 6 चैप्टर में आएगा तो डिस्कस करेंगे, भगवान बताएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, और क्या था? तो समदम क्लियर है, उपरति क्लियर है, सब तितिक्षा क्लियर है। सो ऑल 6-7 ऑफ देम आर क्लियर नाउ। उपरति क्लियर है? तो तूने उस दिन पूछा भी था उपरति क्लियर है तेरे को, तूने बोला भी था। बता जरा एक सेकंड दोबारा से क्या है उपरति। नोट भेजूंगा पूरा। हाँ पीपीटी भेज बनाया दियो हुआ जरा। है। हाँ बताइए, भेज दियो जरा मेरे को। मैं शेयर करता हूँ सारा, उसमें देखना तुम, और तेरे पास भी कुछ ऐड करने को हाँ तो उसमें ऐड करना। हाँ ठीक है। समझने वाला चीज है ये सब चीज। ठीक है, गूगल डॉक्स में डाल दियो, फिर उसमें तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, उपरति ना मेरे को क्लियर नहीं है। मैं पहले इसीलिए इसको पूछा मैंने, क्योंकि इसने पहले पूछा था तुमको कि उपरति क्या चीज होती है। तुमने फिर लास्ट क्लास में तो बहुत देर हाँ बात किए थे इसी पे। 40-45 मिनट तुम उसके ऊपर बात किया था, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं है। फिर भी नहीं समझ में इसीलिए आया क्योंकि हाँ, बेसिक क्लियर नहीं है। बट मेरे को तितिक्षा क्लियर है कि तितिक्षा क्या होता है। क्या होता है? तितिक्षा जो होता है कि अब मतलब कि जो भी मतलब अब कोई वो शोक नहीं, अब कोई मतलब कुछ भी अगर चला जाए तो उसका दुख नहीं, कुछ भी मिल जाए तो उसका खुशी नहीं। और उसको बोलते हैं मतलब काइंड ऑफ संन्यास भावना, जिसको होता है कि हाँ मतलब कोई हो रहा है तो अच्छा है, ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कोई उसके कुछ अटैचमेंट नहीं और कुछ वरी नहीं और कुछ लैमेंटेशन। नहीं है, ऐसा नहीं है। उपरति हो गया ना जो बोली अभी। नो अटैचमेंट इज रिनंसिएशन। नहीं, लाइक हम लोग जो बात किए थे उपरति का मतलब भी तो यही था कि मेरा जो है इंजॉय करने का वो नहीं है अंदर, डिजायर टू एंजॉय दिस वर्ल्ड अरे इवन वो तो बाय बीइंग इन दिस वर्ल्ड। वो उपरति तो वेरा बोला ना उसने, तो डिस्पैशन बोला था वो। उपरति है स्वधर्म अनुष्ठान। ठीक है, स्वधर्म अनुष्ठान को उपरति बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ धर्म इज उपरति, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है उपरति। भाग्य में और उपरति में एक बहुत बड़ा
vairagya forces to leave the things of attachment behind. Uprati allows us to live in them without being attached. Okay? Clear? दोबारा बोलो. वैराग्य मतलब हो गया सब कुछ हम छोड़ दिए. We don't want to live in this of attachments. So, Is that right? हम जरा कंसेप्ट में समझिए इस चीज को. Not okay. Passion, ragya, is the capacity to stay away from the grips of attachment. Is the capacity to live with them without being attached. Okay. From uparati, no, to have a good sense of needs the capacity of titiksha. Okay. Titiksha has to be a capacity to live effectively in uparati, because objects of attachment without being attached to them necessarily requires us to tolerate all sorrow or pleasure that come them without having any reaction, complaint or blames. That is titiksha. Correct? That's why titiksha is called sarva dukkhanam apratikar purvakam chintalaparhitam. What are you looking? Oh, you're looking for yourself? हाँ, वो कैमरा में देखने आया है. Here. अभी आकर के हमको भी ट्रस्ट करके. ठीक है ना. So sahanam sarva dukkhan apratikar purvakam chinta vilap rahitam sa titiksha nigadyate. ठीक है? Is that clear? Clear. All three? Good. Nice. थ्री क्या बोल रहे आप? वैराग्य और तितिक्षा. हाँ, ओके. है ना? All three clear? तो नोट्स डाल दियो, जरा शेयर करिए तो. ओके, ठीक है. डन. ठीक है. और क्लास का चेक कर रहे हैं हम लोग पिछले 2 घंटा से लगभग. हाँ, ऑलमोस्ट 2 आवर्स. अब लास्ट क्लास हो गया तो और आप 9:30 बजे लगभग 11:30 अभी. हाँ, 11. we were there for 1 hour 51 minutes. तो और क्या था इसमें? और कुछ हम लोग को शुरू करना था ना आज कुछ. तो अब अगले बार पढ़ने दो. अब अगले बार ही शुरू कर पाएंगे. तो
ठीक है। और कुछ शेयर कर रहे होंगे, कुछ शेयर कीजिए। कोई कुछ पढ़ा होगा, कुछ शेयर कीजिए। अगर कोई कुछ नहीं पढ़ा है तब तो गलत चाहिए ना। हम ये श्लोका पीछे वाला रिवाइज किए थे, तो हाँ हम 2.7 तक पढ़े थे। हाँ वो उसी में से वही कंपैशन पूछे थे, वो उसी उसी वजह से आया था। एंड देन देयर वाज अ रियलाइजेशन सो कि 2.6 में आप जो क्वेश्चन अच्छा कि अर्जुन क्यों पात्र बना इस महाउपनिषद का, उसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद ने। तो तीन बार जब तक तो डिडंट इवन रियलाइज कि एग्जैक्टली यहाँ पे बोला हुआ है। हाँ। दैट वाज अ आई ओपनर। क्या 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 लिखा हुआ है, जरा बताइए, शेयर कीजिए। उन्होंने लिखा हुआ है, हाँ ओके, ऑल दीज, हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, हाँ उसका तो बहुत कुछ हुआ है। हाँ So all these considerations were definitely proved that not only was he a great devotee of Lord, but he was enlightened and had complete control over his mind and senses. Here to live by begging, although he was born in the royal household, is another detachment. तो यहाँ तो के बाद ये एक जो दो लाइन और कुछ लिखा फर्स्ट हुआ है। लाइन जो आप पढ़े में ये बताया हुआ है कि उसका शम और दम, तीसरा ट्रेंड जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट है, और चौथा क्वालिटी जो बता रहा है वो डिस्पैशन है ना। तो हम लोग उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है कुछ भी, लेकिन कि आदमी जानता है तो नहीं समझेगा। नहीं, सही बात है कि हम आपसे बात करने से पहले हम दो चार बार पढ़ चुके थे इसको, नोट्स भी बनाए थे, बट नेवर एवर इनटू माय माइंड स्पोक टू यू, और फिर हमने फिर से पढ़ा तो समझ में आया कि यहाँ तो ये लिखा ही हुआ था। तो बेसिक्स है ना, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, इसलिए वो सब बेसिक्स है। बेसिक्स अगर क्लियर नहीं रहेगा तो भगवत गीता पढ़ना इतना आसान नहीं है, और समझना इतना आसान नहीं है। बहुत गूढ़ तत्व है इसमें ना। और भी था 2.2 में, जहाँ पे बात कर रहे हैं तीन फेजेस की, हाँ ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। हाँ So that's into two phases, and all of them are identical. होते हुए भी जो है उन्होंने तरह का ये बताया था, और उसमें सन का एग्जाम्पल दिया था कि someone who understands the sun's heat and light, he is kind of Brahman, and someone who understands थोड़ा और ज्यादा उनके बारे में towards the core is closer to परमात्मा, and जो सन के एकदम अंदर जाके उसको देख भगवान, तो इस तरह का वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। और जो बीच वाला हमको ठीक से समझ में आया नहीं था, वो भी मेरा क्वेरी था एक कि ये परमात्मा वाला क्या क्वेरी है, या तो आप सन के बाहर हैं या सन के अंदर हैं, तो बीच वाला क्या हुआ परमात्मा। थोड़ा जब आगे जाएंगे ना हम लोग भगवत गीता, तब इसको समझने में थोड़ा फिर टाइम रहेगा समझने का। वैसे इस वर्ष से इस कंसेप्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, इसमें भगवान खाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको, कैसे स्टार्ट हुआ। करेक्ट।
इन सिंपल बस इतना ही है कि भगवान इसे पूछ रहे हैं कि ये सब तुम कैसे यहाँ पर पहुंचा, ये कैसे आया, थॉट कैसे आया, इतना ही पूछ रहे हैं भगवान। अच्छा। ये बातचीत है ना, दिस इज जस्ट अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। There is no talk of Paramatma, God or Brahman at this time in their discussion. Anyway, nobody talks श्लोका about में तो that. नहीं है, एक बार नहीं। Nope. They're just talking about this. You are not like that. How did you get into this trouble? Correct. Correct. That the time to understand Brahma is going to be very late. And when Arjun explicitly asks किम ब्रह्म, तब भगवान बताएंगे उसको अक्षर परब्रह्म, तब डिस्कस करने का समय है कि ब्रह्म है। तो अभी क्लियरली समझना इम्पॉसिबल है इस स्टेज पर। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म को समझने का भी बहुत वेग है। ठीक है ना, और भगवान खुद बोलेंगे कि ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता है। ब्रह्म इज एबल। तो हम लोग थोड़ा प्रीमेच्योर हैं उस लेवल का डिस्कशन के लिए, क्योंकि ब्रह्म का अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जगह लेके जाना पड़ेगा। इसलिए और कुछ माता जी कुछ बोलेंगे? नहीं, माता जी से पूछने के बिना माता जी कुछ नहीं। वॉलंटरली इंफॉर्मेशन शेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है क्या? नहीं। किसी को कुछ बता देंगे, कहीं किसी को मुक्ति मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर घर में काम करने के लिए कोई नहीं रहेगा ना। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन मोड में। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन यही रियलाइजेशन का पाथ है। करेक्ट पाथ पे आगे निकल के हम लोग कुछ बताते हैं। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना, इसको लगता है कि कहीं दूसरे लोग को मुक्ति मिल जाएगा पहले, तो घर में काम करने के लिए नहीं रहेगा। बताने का नहीं है किसी को। आत्म अनात्म विवेक जो हम लोग बात किए थे, दैट इज दैट। वेल, और कुछ क्वेश्चन करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2.7 से स्टार्ट करते हैं टाइम, प्रोवाइडेड आज की क्लास में कोई लेक्चर नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी तक तो नहीं है प्रभु, रिव्यू करेंगे तो शायद हो सकता होगा, 100% होगा ही शायद, क्या पता है। ठीक है, फिर तो और किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं तो फिर बंद करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी से बात हुई है मेरी इस वाले वीक? हुई नहीं है, तेरी हुई है? हाँ हाँ, हुई थी, ठीक ठाक। शादी में नहीं रहे पापा जी?